sixth chapter is foods we eat. So let us see what is given in this chapter. Before starting our chapter, I would like to tell you that India is the country of diversities. बहुत सारी विभिन्नताएं हैं हमारे देश में and people live in different regions, different states. और स्टेट वाइज अगर हम देखें तो हमारी लैंग्वेजेस, हमारे खान पान का तरीका, हमारे कपड़े पहनने का तरीका सब कुछ अलग होता है. इट इज़ डाइवर्स इन ऑल द मैटर्स regarding food, clothes, regarding languages, there are many varieties. So the food habits in all the regions of India are different because it totally depends upon the area they live in, because they eat the food which is produced in that particular area. And again it also depends upon the culture, हमारे रीति रिवाज, खान पान के तरीके. तो टोटली हर फैमिली में अगर हम देखें तो खाने पीने का तरीका अलग होता है. Here we have some children who are sitting together and they are discussing about the food they ate last night. So last night, first child is saying, last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. हम बाजरे की चपाती खाते हैं ना, जिसको हम बाजरे का रोटला बोलते हैं. Okay, he ate it with jaggery. Now what is this jaggery? It is गुड़, जिसको हम हिंदी में गुड़ बोलते हैं. Second child said, I cooked दाल एंड राइस. जो सेकेंड गर्ल बैठी हुई है उसके बाजू में, उसने क्या कुक किया था? दाल एंड राइस, जो हम दाल भात खाते हैं वो. देन द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू हर इज सेइंग, yesterday no food was cooked in my house. So sad. वो क्या बोल रही है कि मेरे घर में तो कल खाना ही नहीं पका था. क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. मे बी शी इज़ बिलोंगिंग टू अ पुअर फैमिली, उनके घर में कुछ खाने के लिए ही ना हो, या मे बी उसकी मम्मा घर पर ना हो, या मम्मा की तबीयत ठीक ना हो. शी मे नॉट बी वेल, सो शी वॉज अनेबल टू कुक. इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट द अदर चाइल्ड इज सेइंग. हाँ, एक छोटा सा सरदार जी आपको दिख रहा है बाजू में, वो फर्स्ट बॉय के बाजू में बैठा है. व्हाट ही सेड, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर. गुरुद्वारे में लंगर होता है ना, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ लंगर खाने गया था. वहाँ पर उसने क्या खाया? दाल एंड चपाती. देन द अदर गर्ल इज सेइंग, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड. इस चाइल्ड को खीर और पूरी नहीं अच्छी लगती, तो उसने क्या खाया था? ऑमलेट खाया था. एंड द अदर बॉय सेड, माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी एन्जॉयड ईटिंग इस. इस चाइल्ड की मम्मा क्या लेकर आई थी? नूडल्स लेकर आई थी, और इन सब ने मिलके एन्जॉय किया नूडल्स को खाना. देन द अदर गर्ल सेड, माई मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी. और इस चाइल्ड को फिश खाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसने तो बहुत चाव से खाई. तो बच्चों, हमने क्या देखा कि ये सभी बच्चों के घर में कुछ डिफरेंट कुक हुआ था और उन्होंने कुछ अलग ही तरीके का खाना खाया. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, और इन सब के घर में अलग अलग खाना खाने का प्रचलन है, रिवाज है. ओके, सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर कल्चर विच फूड दे ईट. नाउ कम टू पेज नंबर 39 ऑफ योर बुक. क्वेश्चन इज, व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे? राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो. आपने कल क्या खाया था, आपको याद है? तो चलो हम फटाफट नोट कर लें. लेट अस सी दिस क्वेश्चन ऑन द बोर्ड आई हैव रिटन. आंसर इज, व्हाट कैन यू राइट ऑन योर प्लेट? दाल, राइस, chapati. Chapati is what? Roti. Curry. Curry is also known as sabji. Then raita and salad. Your answer may differ. आप अपनी चॉइस की चीज़ भी इसमें लिख सकते हो. सपोज कल आपने छोले पूरी खाएं तो आप छोले पूरी भी लिख सकते हो. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. आई हैव रिटन द आंसर. नाउ on the blackboard write the names of all the food items that you have written on your plate. So what you have to do, you have to note down these names in the plate given. Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? Let us look at the next question. कि क्या सभी बच्चों ने एक जैसा ही खाना खाया था कल? If yes, then why? If no, then also we have to give the reason. But it is not always the same.
Our answer is what? No. Why it is not yes? Because they all belong to different regions. As I told you, हमारा खान पान किस पर डिपेंड करता है? The region where we live, and of course different culture. Okay? हमारे घर का कल्चर अलग होगा तो हम डिफरेंट खाना खाएंगे बाकी फैमिलीज से. Now next question is, you must have noticed that in the picture on page number 38, there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? Now the reason may differ from person to person. अगर इस चाइल्ड के घर में खाना नहीं बना है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? मे बी मदर वॉज नॉट एट होम, मे बी मदर वॉज इल so she was unable to prepare anything, or it may be the reason that the child is belonging to a poor family और उनके घर में कुछ कुक करने के लिए सामान ही ना हो, उन्होंने खाना ही ना बनाया हो. Now our next question is, has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? हमारे साथ ऐसा कभी हुआ है? हो सकता है सभी के साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि घर में मे बी मदर वॉज नॉट देयर, खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, एंड वी वर फीलिंग वेरी हंग्री. ओके, सो डिफरेंट आंसर्स मे बी देयर. आई विल गिव यू सम ऑफ द आंसर्स. येस, इट हैज़ हैपेंड विथ मी व्हेन देयर वॉज नो फूड, cooked food or food to eat. I was feeling very hungry because my mother was out of home because of some urgent work, or maybe my mother had gone to hospital for treatment. So there may be different reasons for this question. Now how do you know that you are hungry? This is very important question. कि हमें पता कैसे चलता है कि हमें भूख लगी है या हम hungry हैं? How do you feel when you are hungry? So answer for this question is what? When we are hungry, our stomach is empty. हमें कैसी फीलिंग आती है जब हम हंग्री होते हैं? पेट पूरा खाली लगता है कि हमारे स्टमक में कुछ भी नहीं है. एंड एट दैट टाइम हाउ डू वी फील? वी फील लाइक ईटिंग समथिंग, कि हमें उस टाइम कुछ भी मिल जाए हम खाने के लिए रेडी हो जाएंगे. ओके, नाउ लेट अस कम टू पेज नंबर 40. Here is a story about Whipple's family. In Whipple's family, there are some members who do not eat what Whipple eats. Do you think these people do not eat or cannot eat what Whipple eats? Let us read about Whipple's family. Whipple की फैमिली में सभी लोग वो सेम खाना नहीं खाते हैं जो Whipple खाता है. तो उसके पीछे क्या रीज़न है? क्या उनको वो खाना पसंद नहीं है कि वो लोग नहीं खा सकते हैं? While returning home from school, Whipple bought a bhutta, that is a corn cob. भुट्टा आप सबको पता है ना? You can see in this picture given what is bhutta. He reached home and asked his mother, "Where is Chutki? I want to see her." As soon as he reached home, he asked about Chutki. वो Chutki को देखना चाहता था. His mother replied, "Chutki is in the room upstairs." Chutki तो ऊपर अपने रूम में है. Whipple caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." His mother stopped him. "I have soaked Ba's chapati in dal. Let her first have her meal." Whipple ने अपनी ग्रैंडमदर को क्या बोला कि आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी ऊपर चलो, हम छुटकी के पास जाएंगे. But his mother stopped him. उन्होंने क्या बोला कि मैंने बा के लिए चपाती को दाल में मिक्स करके रखा है. सोक्ड मीन्स डुबो के रखना या भिगो कर रखना. तो उन्हें पहले अपना खाना खा लेने दो. नाउ कैन यू टेल मी व्हाई द दाल और चपाती वर मिक्स टुगेदर? यस, टू मेक इट सॉफ्ट. चपाती को सॉफ्ट बनाने के लिए. बिकॉज ग्रैंडमदर की एज तो ज़्यादा होगी ना, और बड़ी एज में क्या होता है, हमारे टीथ वीक हो जाते हैं. तो मे बी हिज ग्रैंडमदर वॉज अनेबल टू ईट चपाती like that only, so she had soaked his mother had soaked it in dal to make it soft. Have you put sugar in the dal? अब देखो बा वर्ड से क्लियर हो रहा है कि this family belongs to गुजराती culture. गुजरातीज में बोलते हैं ना ग्रैंडमदर को बा, और हम क्या करते हैं, we put little sugar in dal. हमारी दाल कैसी होती है,
खट्टी मीठी होती है. So what grandmother is asking, have you put sugar in dal? क्या तुमने दाल में शुगर डाली है? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said दादी to Whipple's mother. तो दादी ने विपुल की मदर को रिमाइंड करवाया कि आप नागपुर आने के बाद दाल में शुगर डालना भूल गए हो. आज डाली है कि नहीं? I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Whipple's mother. विपुल की मदर ने क्या रिप्लाई किया कि हाँ बा, मैंने शुगर डाली है, दाल अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है, मैंने टेस्ट करके देखी है. Whipple picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. विपुल ने क्या किया? बाकी वो प्लेट ले ली जिसमें दाल एंड चपाती मिक्स की हुई थी और वो लेके स्टेयर्स को ऊपर चढ़ने लगा. एंड ही आस्क्ड हिज ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर को क्या बोला? आप भी जल्दी जल्दी मेरे पीछे ऊपर तक आ जाओ. When I was of your age, I could run up a hill in the same time, said दादी. तो दादी ने क्या बोला कि जब मैं तुम्हारे एज की थी ना विपुल, तब मैं भी ऐसे ही फास्ट सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी. मैं तो पूरे हिल भी चढ़ जाती थी और इतनी ही स्पीड में जितनी स्पीड में अभी तुम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो. विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी. विपुल ने क्या किया? भुट्टा अपनी मामी के हाथ में दे दिया. वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल छुटकी. अपने हैंड्स वॉश किए टू एंश्योर दैट ही इज क्लीन. हिज हैंड्स आर क्लीन बिफोर लिफ्टिंग छुटकी. Suddenly छुटकी started crying. छुटकी तो रोने लगी because she was hungry. Said Mami. She sat down to feed छुटकी. As छुटकी was hungry, Mami sat to feed her. Now, why was Dadi not able to climb the stairs quickly? Can you answer this question? Yes, you all know your grandmothers, they are unable to walk quickly. They are unable to climb up the stairs because they are old and they are weak. Their body becomes weak as they grow old. How does Dadi like to have her dal? दादी को दाल कैसी पसंद थी? Little sweeter. तो she wants sweet in her dal or little sugar in her dal. Now let us come to page number 41. How many persons in the story can eat भुट्टा easily and why? इस स्टोरी में कितने मेंबर्स बताए हमें? 4 मेंबर्स बताए ना. उसमें से कौन कौन भुट्टा खा सकता है? सॉरी 5 मेंबर्स बताए हैं इंक्लूडिंग छुटकी. सो हु ऑल कैन ईट भुट्टा? देखो पहले तो मदर है, वो खा सकती हैं भुट्टा. मामी एंड विपुल, ओनली 3 मेंबर्स कैन ईट भुट्टा वेरी इजीली. वाई? बिकॉज देयर टीथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग. कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? क्या सारे ओल्ड पीपल भुट्टा खा सकते हैं? नहीं ना. वाई? बिकॉज देयर टीथ आर नॉट स्ट्रॉन्ग. बिकॉज ऑफ ओल्ड एज देयर टीथ बिकम very weak. For 4 months, our next question is, for 4 months, Chutki will have only her mother's milk. That is her only food. Why? This also we all know, small children, babies, they cannot eat anything. Why? Because they have no teeth in their mouth. So they are totally depending upon the milk. Now, ask your elders and fill in the table. What can they eat and what they cannot eat? This question I will explain you on the board. So let us look at the board and see this exercise. Ask your elders and fill in the table what can they eat and what they cannot eat. Okay, so our first person is a child. What can a child eat? Child can drink milk, can eat pulses, rice, porridge. Porridge means khichdi or dalia, fruit, its pulp, etc. Cannot eat chapati. A child cannot eat chapati, hard fruits and nuts because they have no teeth or weaker teeth. Their teeth are not very strong. Then next is young. Young people can eat chapati, nuts, fruits, vegetables and almost all the things. They can eat everything because their teeth are very strong. Then let us see what can
old people eat? Old people can eat soaked chapati. It can be soaked in dal, any curry or in milk. Then rice and dal they can eat easily. Porridge, again as I told you, khichdi or dalia. And mashed fruits. Some fruits which are little bit harder can be mashed and given to the old people. Old people cannot eat hard fruits, nuts and other hard things. Okay, all soft material can be eaten by the old people. Now our next activity is put circle on the things that you eat often. Often मतलब ज़्यादा करके हम जो चीज़ें खाते हैं. Okay, so the first example is rice. Do you eat rice regularly? Yes, of course. Wheat also we eat regularly. Barley, sometimes, not always. Oats also very rarely we eat. Okay. Then maize can be eaten regularly. Then millets also can be eaten regularly. Kappa or tapioca. Okay, it is rarely eaten. It is a South Indian food from which sabudana or sago is made. Okay, so it is in South India they eat it, but here in our culture we don't eat kappa or tapioca regularly, but sabudana in our fast we are eating sometimes. And ragi is again a food grain that is eaten very rarely. Mostly by village people it is eaten. Chapatis made of ragi are eaten by the people in village areas. In city areas we rarely eat it. Okay, so we can put circle on rice, wheat, maize and millet. Millet is what? बाजरा. बाजरे का रोटला मोस्टली हम गुजरात में खाते हैं. Okay, so we can circle on these things. Now let us see our next explanation. Most of our food is made of these things depending on what grows easily at which place. As I told you, it depends upon the region where we live. Different things are eaten at different places because our eating habits totally depend upon the place where we live in. Now children, come to page number 42. Find out where each of these things is eaten more. The things which are grown in a particular place are eaten in that area. For example, rice, wheat, etc. Okay? We not only eat different things, but we also use the same things to prepare a variety of food items. For example, rice and wheat we can take. Not only we are eating rice in the form of only भात. राइस को सिर्फ कुक करके भात बना के ही नहीं खाया जाता, बट राइस की और डिफरेंट वेराइटीज़ भी बनती हैं. सिमिलरली wheat also can be prepared as different variety of food. Now find out and write what all can be prepared from rice and wheat. So let us look at this activity. Let us see the variety prepared by wheat. From wheat we can prepare chapati, halwa, it is already given in the book. What else we can write? Cakes. Yes, cakes can be prepared from wheat. Other things are noodles, bread, puri. And some more varieties are parathas, biscuits, cookies. You can write down any of the varieties in these blanks. Now look at this. The varieties to be prepared from rice. What can we prepare? Dosa, pulao, idli, rice bread, biryani, porridge. As I said, porridge is khichdi or dalia. Then extra things are lemon rice and kheer can also be prepared from rice. So you can write down the answers as per your choice. Now let us see the other exercise. How many things did you write? Similarly, different pulses, vegetables, fruits, meat, etc. are eaten in different places. People have different likes and dislikes. Let us talk about it. Write the names of 3 food items you like to eat and 3 that you dislike. Now again, it depends upon you. The answers may vary from person to person. Here I will just
read out some items which you can write. Likes. In likes you can write down ice cream, samosa, dosa, idli, paneer, etc. And in dislikes, some people don't like these things, so it can be written pumpkin. You know very well what is pumpkin, right? Then bottle gourd and bitter gourd. These things are not liked by many people. So if you don't like these things, you can write down in dislikes column. Now our next activity is, are your likes and dislikes similar to that of your family members? No, not at all. As I told you already that it depends upon our tastes, our choice, our interest. Okay, so our taste may differ from other family members. And from your friends, here also our answer will be no, because our choice is different, our interests are different. So from one friend to another, the choice of food will be different. Likings and dislikings for food will be different. Because what is the main reason behind it? Because we all are unique. Every person, each person is unique and has different tastes. Now come to page number 43. Let us talk to some people and know what they like to eat. So our first girl is Li Chen. What she is saying, let us see. I live in Hong Kong. My mother and I both love to eat snakes. We know Hong Kong कहाँ पर है? चाइना में है. तो चाइना में तो snakes, lizards ये सब खाए जाते हैं. तो even this girl also likes to eat snakes. Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat ling hu fen. This is one of the variety, okay, of food which they are liking to eat in a hotel. Now the next girl Juni is from Kashmir. So let us see what she likes to eat. I live in Kashmir. I like fish cooked in mustard oil. Once we had gone to Goa, we ate fish there, but it tastes very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. अब जब हम कुकिंग करते हैं ना, तो कुकिंग में हमने कौन से ऑयल और कौन से स्पाइसेस ऐड किए हैं, द टेस्ट डिपेंड्स अपॉन दो स्पाइसेस एंड ऑयल. तो जो फिश ये कश्मीर में खाती थी, वेराइटी ऑफ फिश, स्पीशी ऑफ फिश वाज डिफरेंट, सो एंड इट वाज प्रिपेयर्ड इन मस्टर्ड ऑयल, तो उसकी टेस्ट डेफिनेटली जो गोवा में फ़िश प्रिपेयर की जाएगी उससे डिफरेंट होगी, बिकॉज गोवा में coconut oil or some spices are differently used to cook fish. Now next boy, he is Thomas from Kerala. What he is saying, I really like to eat two things, but both grow in our courtyard. इनके courtyard में ही दोनों चीज़ें उगती हैं. One grows on a tall tree. Tall tree पे क्या उगता है, क्या produce होता है? Yes, you are right, it is coconut. And the other अंडरग्राउंड. अब अंडरग्राउंड में देखें इसके घर में क्या ये उगाता है और खाता है. इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपियोका. टेपियोका मैंने आपको क्या बताया था? कप्पा. कप्पा को बोलते हैं टेपियोका. इसको कुछ प्रोसेस करके इसमें से साबूदाना भी बनाया जाता है. सो ही ईट्स बॉइल्ड टेपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट. जैसे हम गुजरात में कोई भी करी या कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो वी यूज़ लिटिल बिट जैगरी. मैंने आपको बताया था जैगरी क्या होती है, गुड़. और हम क्या यूज़ करते हैं? ग्राउंड नट्स, सींगदाने यूज़ करते हैं. सिमिलरली साउथ में दे यूज़ कोकोनट, बिकॉज कोकोनट इज़ प्रोड्यूस्ड बेसिकली इन केरला. सो दे यूज़ टेपियोका एंड कोकोनट इन ईटिंग एंड इट टेस्ट्स वेरी गुड. थॉमस को ये दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है. सो लेट अस सी आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44. व्हाट आर द रीजन्स दैट डिसाइड व्हाट वी ईट? पुट अ टिक ऑन देम, एड टू द लिस्ट. सी, we eat what is easily available. As I told you, it depends upon area, the region where we live. तो जो भी फूड आइटम्स जहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन होती है
वो उसी फूड के ऊपर निर्भर होती है या डिपेंड करती है. So what is easily available? Yes, it is correct. What we can buy? Yes, also it depends upon our capacity, how much we can afford to buy a thing. Okay, and customs and traditions, of course our food items and habits depend upon our customs and traditions. Then next items you can write is taste of preference, that is likes. What we like, we eat that. And our favorite foods, again it depends upon region कि उस region में कौन सा food available है और वो हमारा favorite है, तो हम favorite food को ज़्यादा खाना चाहेंगे, right? Now our next activity is names of some things are given below. Put a tick mark on the things that can be eaten. If you are not sure about anything, you may ask your teacher. Okay, so let us see. Banana flowers. No, banana fruit is eaten, flowers are not eaten. Then hen's eggs, yes, by some people hen's eggs are eaten. So put a tick mark near eggs. Cauliflower, yes, it is mostly eaten by all the people. Drumstick flowers, yes, we can prepare sabzi or curry out of drumstick flowers and it can be eaten. Leaves of arvi leaves are eaten. Okay, हम जो पात्रा बनाते हैं ना, वो पात्रा भी अरवी के लीव्स में से ही बनता है, जिसको किसी किसी रीजन में कचालू भी बोला जाता है अरबी को. ओके, मीट, यस, ऑफ कोर्स द नॉन वेजिटेरियन पीपल दे लाइक टू ईट मीट ऑल्सो. मशरूम इज ईटन बाय मेनी पीपल. रैट, नो नो नो, इन इंडिया वी डोंट ईट रैट. ओके, सीड्स ऑफ अनियन जिसको हम कलौंजी बोलते हैं, हाँ, ये कुछ डिशेस में स्पेशली डाली जाती है. Lotus stem, yes, it is also eaten. Then next is fish. Again I say non-vegetarian people like to eat fish. Crab also non-vegetarian people eat it. Red ants, no no no. Rats, frogs, red ants, all these are eaten in China, not in India. Grass, grass is eaten by animals, right? We don't eat grass, so don't put any tick mark near grass. Leftover chapati, yes, we convert leftover chapatis into different things. हम जो चपाती दोपहर की बच जाती है ना, उसको शाम को हम कभी फ्राई करके भी खा सकते हैं. ओके, सो इसको हम डिफरेंट थिंग्स में कन्वर्ट करके खा सकते हैं, डिफरेंट वेराइटी बना के. देन आंवला, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, इट इज़ फुल ऑफ विटामिन सी एंड आयरन. And then coconut oil, yes, of course many things are prepared by the people in coconut oil also. Camel's milk is eaten, especially in, camel milk is drunk by the people in Rajasthan. Then chapati, of course it is a very common food for all of us, and chapati made of bajra is eaten mostly in Rajasthan and Gujarat, and chapati made of grams is also eaten in few regions. Okay, write the names of some food items that you have never eaten before but you feel like eating. Now it again depends upon, yes, it is depending upon person to person. The answer will vary definitely, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने नहीं खाई है वो आपने भी ना खाई हो, या जो चीज़ आपने कहीं नहीं खाई है वो मैंने कभी ना खाई हो. So it depends upon you, which thing you have never eaten and you feel like eating in near future. Okay, so we can see some points, important points which we have discussed in our today's chapter. Food habits depend on the region we live in. Okay, the things which are available in our area we eat in more quantity. Each person has his or her own likes and dislikes, yes, and the age of a person decides what he or she likes to eat, because it depends upon the capacity. Okay, it depends upon the strength of the teeth and of course digestion. It happens some people are unable to digest some particular type of food. Okay, so from person to person, from family to family, the food habits differ. So this was all about our today's topic, that is foods we eat. We will meet with our new chapter in our new session. Till then, goodbye.
be healthy and stay safe at your home.